यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए आज हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की यूनिट 10th ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैज़र्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी फर्स्ट टॉपिक होगा न्यूमोकोनियोसिस। ऑब्जेक्टिव्स हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस द वर्ड न्यूमोकोनियोसिस इन स्लाइड नंबर 5, define pneumoconiosis in slide number 7, risk factors of pneumoconiosis in slide number 11, causes of pneumoconiosis in slide number 13, next pathophysiology of pneumoconiosis in slide number 15, next symptoms of pneumoconiosis in 19th slide, diagnose the condition of pneumoconiosis in 22 slide number, medical management 24, surgical management in 27 number slide, prevention in 29th slide. Next condition will be asbestosis. Define asbestosis in 36 slide number, causes of asbestosis in 37 slide number, pathophysiology 39, symptoms in 41 number slide, diagnosis in 44, medical management of asbestosis in 46 number slide. First of all, introduce the topic. Basically, we'll talk about today restrictive lung disease in respiratory pathology. Within that, the topic will be pneumoconiosis first, and second will be asbestosis. So, pneumoconiosis actually known as non-neoplastic interstitial fibrosis that occurs due to inhalation of certain minerals like silica, asbestos. Most of the time they are occupational hazards. Why they are occupational hazards? Because this is directly linked with the occupation, and this disease is known as a restrictive lung disease because it reduces the lung capacity as well as lung volume. Normal clinical features of the disease includes like dyspnea, cor pulmonale, shortness of breath, cough, heart failure, etc. The term pneumoconiosis derived from two Greek words. One is pneuma, which means air, conis means dust, and it is a general term that for any lung disease caused by dust that are breathed in and even deposited deep in the lung, causing damage. Pneumoconiosis is usually considered as occupational lung disease or also known as black lung disease. Pneumoconiosis is derived from two Greek words pneuma means air, conis means dust, and it is the general term for any type of lung disease developed by dust particle. Pneumoconiosis is also known as black lung disease. Why it is known as black lung disease? If we are taking one example of coal worker pneumoconiosis, and this coal worker pneumoconiosis is also known as black lung disease. Why? Because one person has to expose for long time and has to inhale the dust for long period of time, and this continuous exposure of coal dust cause scarring of the lung or develop fibrous tissue in the lung or fibrous formation in the lung, which leads to impairing the ability to breathe or impairing the ability to inhale. That's why it is known as black lung disease. Definition. According to International Labour Organization, pneumoconiosis is the accumulation of dust in the lungs, then the tissue reaction to the presence. लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन है, दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट इन द लंग्स, एंड जब लंग्स में डस्ट हो जाते हैं एंड हमारे मैक्रोफेजेस कैसे रिएक्ट करते हैं एंड व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ आवर टिश्यूज एंड मैक्रोफेजेस और आवर सेल्स टुवर्ड्स दिस डस्ट, दिस इज नोन एज pneumoconiosis. प्रैक्टिस क्वेश्चन 1. न्यूमोकोनियोसिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक लंग डिजीज. आपको पता ही ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि न्यूमोकोनियोसिस क्या होता है, इसको ब्लैक लंग डिजीज बिकॉज इसमें स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाते हैं लंग्स में. नाउ रिस्क फैक्टर. The risk is generally higher when people have been exposed to mineral dust in high concentration and for long period of time. Inadequate or inconsistent use of personal protective equipment such as respirator is another risk factor. Main risk factor: long-term exposure of dust,
without any personal protective equipment or respirator is the risk factor of pneumoconiosis. Now, causes. If we are taking one example of coal minor pneumoconiosis, in this case, this disease can develop by long-term exposure of airborne dust, and this airborne dust is breathed in into the lung. Long-term exposure matlab for 8 to 10 years of exposure. Next, particles of appropriate size. Pneumoconiosis में one thing you have to keep in mind that size of the particle size. पार्टिकल साइज को हम 3 क्लासिफिकेशन में बताते हैं. फर्स्ट इज लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स, नेक्स्ट इज मीडियम साइज ऑफ पार्टिकल एंड थर्ड वन इज स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल. जो मीडियम साइज ऑफ पार्टिकल होते हैं दिस इज 1 to 5 माइक्रोमीटर. आप इधर देख सकते हो. दिस इज द मोस्ट डेंजरस पार्टिकल और मोस्ट प्रॉब्लमेटिक पार्टिकल एंड दोज पार्टिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर pneumoconiosis. Why this is dangerous particle or this medium size particle? Because this particle actually trapped in the bifurcation of the relatively small arteries, and जब ये trapped हो जाते हैं तो हमारे mucociliary elevators को भी वो particle को बाहर bring them back possible नहीं होता और बाहर निकालना possible नहीं होता इस particles का. तो इसीलिए this is the most dangerous particle and वो particle कभी भी गैस की तरह काम नहीं करते, सो वो ट्रैप होके रह जाते हैं. तो दिस इज द प्रॉब्लमेटिक पार्टिकल 1 to 5 माइक्रोमीटर. एंड सम एग्जांपल ऑफ ऑक्यूपेशन दैट मे ब्रिंग वर्कर इनटू कांटेक्ट एंड डस्ट पार्टिकल with dust particle that cause pneumoconiosis include plumber, roofer, builder who work with asbestos and coal miners and textile worker. जितना भी प्लम्बर है, रूफर है, पेंटर, बिल्डर्स, कोल माइन में जो काम करते हैं वो लोग रिस्क फैक्टर में है. pneumoconiosis डेवलप हो सकते हैं. सिम्टम्स: कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, हाइपोक्सीमिया, चेस्ट टाइटनेस, ब्रेथलेसनेस एंड इसके मेन सिम्टम होते हैं एंथ्राकोसिस. सो व्हाट इज एंथ्राकोसिस? एंथ्राकोसिस इज नथिंग बट डिपोजिशन ऑफ कार्बन और कोल इन द लंग्स. अगर लॉन्ग टाइम एक्सपोजर हो रहा है तो कार्बन और कोल क्या होते हैं हमारे लंग्स में डिपोजिट हो जाते हैं. एक्चुअली एंथ्राकोसिस एक बिनाइन कंडीशन होता है एंड इट इज़ रिलेटिवली लिंक्ड विद स्मोकर्स. इसके एक एग्जांपल मैंने इमेज में शो किया है, आप देख सकते हो. एंथ्राकोसिस की वजह से भी इस कंडीशन को ब्लैक लंग डिजीज़ बोला जाता है. आप देख सकते हो कोल और कार्बन डिपॉजिट हुआ है लंग्स में. नेक्स्ट, डस्ट सेल or black lung disease. What is the dust cell or black lung disease? The dust cell is nothing but whenever the dust particle trapped in the arteries, small arteries, our macrophages get activated. You can see the alveolar macrophages or lung parenchymal macrophages is active, and these macrophages engulf the dust particle by the phagocytosis action. And sometimes this coal just stuck in the macrophages. Now these macrophages has become the dust cell. जब macrophages dust cell को engulf कर लेते हैं and coal इस macrophage में stuck हो जाते हैं, इस macrophage को हम बोलेंगे dust cell. आप देख सकते हो dust cell with in macrophages. Coal with macrophages known as dust cell or black lung disease. Now, progressive massive fibrosis. इसका मतलब है इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस का डेवलप होते हैं एंड डैमेज होना शुरू हो जाता है. लॉट्स ऑफ लंग डैमेजेस में स्टार्ट. इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस. नेक्स्ट, कैप्लान सिंड्रोम. व्हाट इज कैप्लान सिंड्रोम? इफ़ एनीवन सफरिंग फ्रॉम RA एंड इसके साथ इसको कोल माइनर न्यूमोकोनियोसिस हुआ है तो इसको हम बोलते हैं कैप्लान सिंड्रोम. तो पेशेंट विद RA एंड कोल माइनर्स इजीली कैन डेवलप कैप्लान सिंड्रोम. रूमेटेड नोड्यूल्स क्रिएट हो जाते हैं लंग्स में. अब देखो कैप्लान सिंड्रोम में न्यूमोकोनियोसिस प्लस रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नेक्रोबायोटिक नोड्यूल्स, इसको हम बोलेंगे रूमेटॉइड नोड्यूल्स. लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है कैप्लान सिंड्रोम ऑकर्स ओनली इन पेशेंट विद बोथ RA एंड pneumoconiosis.
relating to mining dust. Rapid development of multiple peripheral lungs nodule. Nodule contain a central necrotic area surrounded by black dust with inflammatory cell forming surrounding the dust cell. Prognosis is good with spontaneous remission. मतलब आपको याद रखना है कैप्लन सिंड्रोम में जिस पेशेंट में रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है साथ में न्यूमोकोनियोसिस भी है, इसी पेशेंट में लंग्स में रियोमेटॉइड नोड्यूल्स दिखाए जाते हैं और यू कैन सी द रियोमेटॉइड नोड्यूल्स इन द लंग, तो इसको हम बोलते हैं कैप्लान सिंड्रोम. दैट्स ऑल अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड. Size of particles cause pneumoconiosis. As you know that 1 to 5 micrometer particle is the culprit particle for creating pneumoconiosis because this particle actually stuck in the bifurcation of the alveoli, and this is not at all possible for come out from the lungs by cough, और मैक्रोफेज इसको डैमेज भी नहीं कर सकते, ना वो गैसेस की तरह भी काम करते और गैसियस पार्टिकल्स भी नहीं है वो, इसीलिए दिस पार्टिकल इज़ द डेंजरस पार्टिकल और रेस्पॉन्सिबल पार्टिकल फॉर डेवलपिंग न्यूमोकोनियोसिस. नाउ डायग्नोसिस. फर्स्ट डायग्नोसिस इज हिस्ट्री कलेक्शन. हिस्ट्री कलेक्शन इज mainly focusing the detailed history of patient symptoms and exposure of dust. फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑल फुल बॉडी एग्जामिनेशन, साथ में लंग फंक्शन टेस्ट भी करना है जिसके लिए हम दूसरा टेस्ट करते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट. दिस इज द ब्रीथिंग टेस्ट टू सी हाउ वेल एयर एंटर एंड लीव द लंग. नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे और सिटी स्कैन. चेस्ट एक्सरे और द सिटी स्कैन ऑफ द चेस्ट may show healthcare providers nodules, masses, areas of inflammation, pneumonia, excess fluid in the lungs. Next, oxygen saturation. Oxygen saturation test show how much of oxygen patient breathe and make it in the bloodstream. Another test होता है biopsy, कोई ट्यूमर ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ देखने के लिए. ब्रोंकोस्कोपी. मेडिकल मैनेजमेंट. There are no specific treatment or medication for pneumoconiosis. Most treatment for patient with pneumoconiosis are aimed at limiting further damage of the lung, decreasing the symptoms, improving the quality of life. Doctor may prescribe and inhaled medication such as bronchodilator or corticosteroid. Bronchodilator open up करते हैं एयरवे को जैसे कि salbutamol, and corticosteroid inflammation को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है बुडेसोनाइट. नेक्स्ट अदर मैनेजमेंट में आते हैं जैसे कि पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में भी रिकमेंडेड टू इम्प्रूव द पेशेंट्स एबिलिटी टू एक्सरसाइज. इसमें आएंगे ब्रीथिंग एक्सरसाइज. पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन में काउंसलिंग किया जाएगा पेशेंट्स को. नाउ सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट इज़ रिकमेंडेड फॉर pneumoconiosis in severe cases और in chronic cases. इसमें lungs transplant किया जाएंगे to replace the disease or failing lung with a healthy lung. Now prevention. First, nutritional status maintain करना है, enough rest, exercise regularly, prevent infection. Maintain nutrition, encourage the patient to eat well balanced meat or well balanced diet including fruits and all type of veggies. Drink adequate amount of water, fluid, at least 6 to 8 glasses of water daily. Limit salt intake. Ask the patient to take appropriate adequate sleep in each night. Short rest also they should take. Next, exercise regularly. Exercise regularly means stay active, go to the gym, do not overexert oneself. Infection prevention करने के लिए advise the patient to wash hand regularly, avoid large crowd, flu and pneumonia का इंजेक्शन लेना ज़रूरी है, avoid exposure to bad airs, avoid smoke, spray, vapors. Cover mouth and nose with scarf to avoid breathing cold air or cold weather. Avoid smoking.
Practice question 3. Minor pneumoconiosis is result in minor fibrosis. That's all about pneumoconiosis. So actually pneumoconiosis general term होते हैं जो all type of lungs disease को symbolize करते हैं. And pneumoconiosis को दूसरा नाम है black lung disease, because if you are taking one example of coal worker pneumoconiosis and one person is exposed with coal for continuously for long time, it may be approximately 8 to 10 years, the lungs become fibrous और scar tissue formation हो जाते हैं lungs में. That's why it is known as coal worker pneumoconiosis. Risk factor में smokers आते हैं और जो coal mine में काम करते हैं, those are the risk factor. And without any proper PPE, इसके symptoms में आप देख सकते हो respiratory problem होगा, lungs में scar tissue formation, fibrous टिश्यू फॉर्मेशन होगा, एंथ्राकोसिस हो सकते हैं, कैप्लन सिंड्रोम हो सकते हैं, एंड मैसिव लंग इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस देखा जाता है पेशेंट में. डायग्नोसिस हिस्ट्री कलेक्शन करना है, सीटी स्कैन, एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी, ऑल द डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोकोनियोसिस. एंड मैनेजमेंट, इसका इस सच कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, बट कभी कभी डॉक्टर पेशेंट्स को ब्रोंकोडायलेटर्स एंड स्टेरॉइड्स प्रेस्क्राइब करते हैं. एंड पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इज़ रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट में देखा जाए तो लंग्स ट्रांसप्लांटेशन. Now next condition is asbestosis. What is asbestosis? Asbestosis is a chronic lung condition that is caused by prolonged exposure to high concentration of asbestos fibers in the air. Next definition: a lungs disease resulting from the inhalation of asbestos particles marked by severe fibrosis and a high risk of mesothelioma. So what is asbestosis? Asbestosis is a chronic lung condition for inhalation of asbestos particle, which leads to bronchogenic carcinoma and mesothelioma. Asbestos is mainly seen in the navy ships, old roof, old houses. Asbestos actually come in two important crystal. One is straight crystal, one is flexible crystal. You have to keep in mind, this is the additional information for you. The straight asbestos crystal is the more dangerous because it is literally stiff type of crystal and straight, and this is settled down in the alveoli and develop bronchogenic carcinoma. एंड फ्लेक्सिबल क्रिस्टल जो होते हैं दिस द लेस डेंजरस क्रिस्टल, बिकॉज वो अपर पोर्शन ऑफ द एल्वियोलाई में, अपर पोर्शन ऑफ द एयरवे में स्टक होते हैं एंड कभी कभी म्यूकोसिलियरी एक्शन से वो बाहर की तरफ पिक्ड अप हो जाते हैं एंड थ्रोन आउट ऑफ आउटसाइड. दैट्स व्हाई दिस इज द लेस डेंजरस फ्लेक्सिबल क्रिस्टल. एस्बेस्टोसिस क्या होते हैं? इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टस फाइबर लीड्स टू bronchogenic carcinoma and for severe fibrosis of the lungs. Causes: smoking cigarette, then people who worked in mining, manufacturing company, and installation or removal of asbestos products. Pathophysiology: exposed to high level of asbestos dust over a long period of time, some of the airborne fiber can become lodged within alveoli, irritate and scarred lung tissue, causing the lung to become stiff, not able to contract and expand normally, difficult to breathe. As you know that exposure of this asbestos particle for long period of time, over a long period of time, it may be 8 to 10 years. Some airborne fibers or some asbestos fiber, basically those are straight crystal, can deposit in the deeper portion of the alveoli, and this is not at all possible to thrown out, or they cannot damage by the microphage, and eventually this leads to scar tissue formation and irritate the lungs mucosa or lungs parenchyma, and lungs is not able to contract or expand normally, difficult to breathe. Now symptoms:
shortness of breath, dry cough, chest tightness, chest pain, loss of appetite, cracking sound while breathing, clubbing, asbestos body, plug develop in lower part of the lung and anterior lateral pleura. Different symptoms is similar with pneumoconiosis, though pneumoconiosis is a general term, that's why symptoms are quite similar. But here two main symptoms you have to keep in mind. First is asbestos bodies and plaque development. What is asbestos body? Look the picture. Asbestos bodies is nothing but macrophages covered with irons or ferritin coated on asbestos bodies. Let me tell you clearly, whenever dust particle, asbestos dust particle trapped in the airway, this macrophages eat them and eventually this release irons. जब macrophages engulf करते हैं asbestos particle को, macrophage start releasing iron and these iron coated the asbestos, and this is known as ferruginous bodies or asbestos bodies. Means asbestos coated with iron releasing by macrophages को हम बोलते हैं asbestos bodies. नेक्स्ट प्लग डेवलप हो जाते हैं, लेटरल पोर्शन में होते हैं या लोअर पोर्शन ऑफ द लंग्स में प्लग डेवलप हो सकते हैं. इन्वेस्टिगेशन इज सिमिलर लाइक न्यूमोकोनियोसिस, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, लंग फंक्शन टेस्ट. मेडिकल मैनेजमेंट, इसका भी कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं होते हैं, बट वी कैन एडवाइज द पेशेंट टू स्टॉप स्मोकिंग and flu and pneumonia vaccine are kind of recommended for almost everyone with lungs disease. In a low oxygen level, oxygen installation is required by mask or tube, pulmonary rehabilitation and sometimes lungs transplantation. Health promotion strategies: maintain nutrition, well balanced diet, adequate fluid intake, water intake, salt intake limitation, enough rest. Rest should be taken in between the activity. Next, exercise regularly, prevent infection, avoid exposure to bad air. तो आज हमने ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड्स के दो कंडीशन के बारे में डिस्कस किया है. फर्स्ट इज़ न्यूमोकोनियोसिस, सेकंड वन इज़ एस्बेस्टोसिस. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे. थैंक यू.